Assalamu alaikum. Uh, this is our third episode of why traditional assessment does not work for every child. And the third episode is about what schools must change. So, in episode 1, we explored the problems. In episode 2, we discussed alternatives. But today, we confront the hardest question. Even if teachers want to change, can they? Can they change within the current system? Because inclusive assessment is not just a classroom issue, it is a policy issue, a structural issue, and a leadership issue. So, assessment is a system, not just a test. Most schools they operate within standardized exam boards, fixed grading scales, and rigid promotion policies, and also performance based teacher evaluation. So, when teachers innovate, the final decision is still based on a number, a percentage, a grade. So teachers are also ranked, or you can say teachers are also evaluated on the numbers, on the percentage, on the ranks. Research in assessment theory, which was given by Black and William in 1998, has shown that formative approaches significantly improve achievement, yet policy structures often prioritize the summative accountability. Now, this creates tension between learning centered education and score centered systems. So, schools must broaden. तो हम start करेंगे what is with reform number 1. ठीक है, reform number 1 जो होगा वो that is कि schools must broaden the definition of achievement. अपनी अचीवमेंट की डेफिनेशन को वो ज़रा ब्रॉड करें, सिर्फ ग्रेड्स तक महदूद ना रखें. करंटली अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट इज़ इक्वल टू एग्ज़ाम परफॉर्मेंस. बट 21st century framework emphasize critical thinking, collaboration, creativity और communication. ठीक है? Yet most exam systems measure recall. हम तो सिर्फ एग्ज़ाम देते हैं, उनकी मेमोरी को टेस्ट कर रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम जगहों पे टेस्ट हो रही है. सो पॉलिसी रिफॉर्म शुड इंक्लूड मल्टीपल मेजर्स ऑफ अचीवमेंट, बैलेंस्ड असेसमेंट मॉडल्स, यानी कि फॉर्मेटिव हो प्लस समेटिव, दोनों को मिला के हम एक ऐसा मॉडल बनाएं. देन ग्रोथ बेस्ड रिपोर्टिंग इंस्टेड ऑफ स्टैटिक ग्रेडिंग. वो सारी कंट्रीज़ जो कि इम्प्लीमेंट करती हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन मॉडल्स आर ऑलरेडी मूविंग इन दिस डायरेक्शन. रिफॉर्म नंबर 2 इज़ गोइंग टू बी फ्लेक्सिबल असेसमेंट पॉलिसीज़. पॉलिसीज़ क्या होंगी? स्कूल्स नीड फॉर्मल पॉलिसीज़ फॉर असेसमेंट अकोमोडेशन, अल्टरनेटिव फॉर्मेट्स, असिस्टिव टेक्नोलॉजी. ठीक है, विदाउट पॉलिसी बैकिंग inclusive practices remain optional and they don't become institutional. जब तक के पॉलिसीज़ में रिफॉर्म्स नहीं आएगा तो हम ये नहीं अचीव कर सकते. यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग जो हमने पिछले एपिसोड में बात की थी, वो सजेस्ट करती है दैट वेरिएबिलिटी इज़ नॉर्मल, नॉट ऑप्शनल, बट पॉलिसी मस्ट सपोर्ट दैट बिलीफ. अदरवाइज इंक्लूजन बिकम्स रेट्रिक एंड नॉट रियलिटी. हम बस बात करते रहेंगे इंक्लूजन की, लेकिन उसको हम रियलिटी में किसी तरह नहीं ला सकेंगे. फिर जो रिफॉर्म नंबर 3 है दैट इज़ टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट. बहुत ज़रूरी है टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट. बहुत से टीचर्स दे आर विलिंग बट दे आर नॉट ट्रेन्ड. तो असेसमेंट लिटरेसी मस्ट बिकम पार्ट ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड लीडरशिप ट्रेनिंग. Research shows that when teachers understand assessment design deeply, student outcomes improve significantly. Reform requires capacity building, not just compliance. फिर रिफॉर्म नंबर 4 में लीडरशिप माइंडसेट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे लीडरशिप का माइंडसेट जो है वो एक पुराने माइंडसेट पे हम चल रहे हैं, जबकि हमारी लीडरशिप का माइंडसेट चेंज होना है. स्कूल लीडर्स जो हैं दे शेप कल्चर.
If leadership prioritizes rankings and results alone, teachers will teach to the test. But if leadership values growth, inclusion, mastery, student well being, then assessment reform becomes possible. फिर ही उसी सूरत में assessment reforms की possibility हो सकती है. Institutional culture determines classroom practice. Okay ना? So assessment is not neutral. It reflects values. So when system favors speed, uniformity and written dominance, कि सिर्फ लिखाई पे और उसकी एक स्पीड पे या एक यूनिफॉर्मिटी पे कि एक जैसे एग्ज़ाम पेपर हमने सारे बच्चों को दे दिया, certain learners are systematically advantaged. True equity does not mean lowering standards. It means designing systems where every learner has a fair opportunity to demonstrate a competence. Assessment reform is not about making them easier. It is about making them fairer. We cannot expect inclusive classrooms inside exclusive systems. Inclusive classrooms exclusive system में possible नहीं है. If we truly believe every child can learn, then our policies must reflect this belief. Assessment should not decide who belongs. It should help every learner progress. With this we conclude the series. जिसमें एपिसोड 1 में हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया, एपिसोड 2 में वी डिस्कस द अल्टरनेटिव्स एंड एपिसोड 3 में वी डिस्कस्ड व्हाट मस्ट चेंज. बट द कॉन्वर्सेशन डज नॉट एंड हियर because reforms begins with awareness and awareness begins with us. Thank you so much.